गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि हम e.v.s का चैप्टर आज ले रहे हैं, चैप्टर 4। इसका नाम है आवर यूनिवर्स, मतलब हमारा ब्रह्मांड। और इसके जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो है सन के सूरज के बारे में पढ़ेंगे, स्टार, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड एक्सेट्रा, जो अपन इस चैप्टर में मेन लर्निंग पॉइंट है अपने। चलिए शुरू करते हैं इसमें। ब्रह्मांड कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि जिस ब्रह्मांड में अपन रहते हैं उसको मिल्की वे कहा जाता है, मंदाकिनी जिसको कहते हैं। और ऐसे अनंत कई करोड़ों, हज़ारों, लाखों ऐसे अगिनत या बिना गिनती के ऐसे ब्रह्मांड हैं जो पूरे सृष्टि में ये पाए जाते हैं। उसी में से अपना एक छोटा सा ब्रह्मांड है, द मिल्की वे। और इन्हीं ब्रह्मांडों के बारे में आज अपन शुरू करते हैं, ठीक है। Everything about the surface of the earth is called the sky. The sky is the full of heavenly objects. They teeny skies in the light that the twinkle in the night sky are the called stars. The slow moving bright bodies in the sky are called planet. अब ये होता है इसमें कि प्लेनेट की खुद की रोशनी नहीं होती है। प्लेनेट जो सूरज से आई हुई रोशनी से टकरा के जो चमकता है, जो पृथ्वी से दिखता है, वही उसकी खुद की लाइट होती है। जो फोटॉन्स के माध्यम से, अगर अपन इसको साइंस थोड़ा और डीप में जाएं, जो फोटॉन्स होते हैं वो रोशनी उससे फोटॉन से टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होकर अपने को दिखती है उसकी रोशनी, ठीक है। किसी भी प्लेनेट की खुद की रोशनी नहीं है, ये सब सन की दी हुई रोशनी है जो कि अपने को दिखती है। आगे बढ़ते हैं। द स्टार आर द हर्स बॉल्स ऑन द गैसेस, दे गिव आउट लाइट एंड द हीट। द सन इज ऑल्सो इज द स्टार, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, therefore is the appear big too and bright. Some stars are much bigger than the sun, but they do not appear big and bright because they are very far away. Sun, star, planet, moon and the make the universe. अब ब्रह्मांड किसको कहते हैं? ब्रह्मांड में आपका सूरज, चांद, तारे और ग्रह, ये सब अगर मिलके एक इकट्ठे होते हैं और अपने आसपास मैग्नेट के थ्रू एक घूमते हैं तो उसी को कहा जाता है ब्रह्मांड, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ होगी तो उसको ब्रह्मांड में नहीं जोड़ा जाएगा। ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कंस्टेलेशन, दे फ्रॉम पैटर्न्स इन द स्काई, द नेम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन विच द समटाइम्स रेसल एनिमल्स एंड द पीपल्स। सेवन स्टार्स विच लुक लाइक अ pagan with the handle of is called Big Dipper and the Saptarishi as the formation of receivables of Hunter, Origin and Kalpsutra. अब जो आपको सात सितारे जो दिखते हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये जो सेवन स्टार हैं, जो यूनिवर्स के बिग बड़े स्टार हैं, ये जब रात में अपने को दिखते हैं, जब नॉर्थ की साइड में अपन देखते हैं रात की ठीक 1 या 2 बजे समथिंग अपने को ये दिखते हैं, तो आप इजीली इनको देख पाओगे और इसको आप लिंक कर पाओगे एक दूसरे से, ठीक है। प्लेनेट do not have light or heat. They are known. They shine when the sunlight falls on them. Our Earth also is planet. The other planet is universe are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And the Pluto small body was now as dwarf planet. It was no longer planet of our solar system from 2006. Most planets have moons revolving around them. The earth has one moon. अब प्लेनेट की, जो ग्रह की बात करते हैं अपन, ग्रह की बातों में ये बताया गया है कि जो आपके ग्रह हैं उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है, वो उनकी खुद की गर्मी और उनकी जो खुद की गैसेस होती है उससे वो हीट प्रोवाइड करते हैं और रोशनी जो है वो सूरज से प्राप्त करते हैं। और आपके जो ग्रह हैं जो कि प्लैनेट्स हैं वो मरक्यूरी, ठीक है, सन के सबसे नज़दीक है मरक्यूरी, उसके बाद वीनस, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ठीक है, उसके बाद आपका सर्टेन, यूरेनस एंड नेपचर एंड प्लूटो जो है वो सबसे आखिरी में है, जिसको 2006 से
प्लेनेट की गिनती से बाहर कर दिया उसको, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपकी अर्थ आती है। और जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर जो आपका माना जाए कि बिल्कुल पास है, तो वो आपका मरकरी है। और सन काफ़ी इससे नज़दीक है, ठीक है। The eight planets along the with their moons and the sun make up the solar Mercury, Venus, Earth, and Mars are closer than the sun are called the inner planet. They can be seen from the Earth in the night sky and the naked eye. They all made at the hard rock. अब इसमें कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गैसों से बने हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेनेट भी हैं मर्क्यूरी जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आयरन की मात्रा इनमें, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये लाल दिखते हैं, ठीक है, लाल मिट्टी होती है। उसके बाद फिर एक अदर अगर अपन पे जाएँ तो वहाँ पे हीलियम गैसेस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कहीं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे अपने पास अलग अलग गैसों के पिंड हैं जो कि अपन इनको प्लेनेट का एक रूप मान लेते हैं, ठीक है। और सभी प्लेनेट की अपनी अपनी विशेषता हैं जो कि अपन अब पढ़ते हैं। मरकरी जो है आपका, दिस इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट एज नो मून। इसके पास जो है एक भी खुद का अपना चंद्रमा नहीं है, ठीक है। और ये जो है सबसे छोटा प्लेनेट भी है। Jupiter, this is the largest planet of the solar system. It does shine brightly in the night sky. It is the 63 moons. अब इसकी विशेषताएं क्या है जुपिटर की? इसके पास 63 मून है। जैसे अपने चंदा मामा एक है, वैसे ही जुपिटर के पास 63 चंदा मामा है, ठीक है। वीनस, this is the our nearest neighborhood. This was the brightness of the whole planet. We see the morning and the evening. अब जो आपका वीनस है, इसको आप सबसे नज़दीकी माना जाता है अर्थ के। और इसको आप सुबह जब सनराइज होता है उस टाइम आप हल्का फुल्का देख पाएंगे, और शाम को भी इसको आप देख पाते हैं। Saturn, this is the second largest planet. Is this has 7 rings around it. It is called the planet of ring. It is the 62 नावेस मून। अब सर्टन के पास जो है 62 चंदा मामा हैं, चंद्र मून है इनके पास। और इनके जो आसपास राउंड में जो रिंग घूमती गैसों की, वो उनके पास घूमती है। इसकी विशेषता है सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक प्लेनेट है जिसके पास खुद की एक रिंग है, जो कि वो उससे उल्टी घूमती है। जैसे रिंग पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व अर्थ इनका जो सर्टन है वो ऐसे घूमता है, ठीक है। अर्थ, अब अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अर्थ हैज़ द वाटर एंड एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट एंड इज़ द ओनली प्लेनेट विच इज़ लाइफ ऑन इट। अर्थ हैज़ 1 मून। अब पृथ्वी आपकी एक ऐसी एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर पानी भी है, एटमॉस्फेयर भी है, जो कि इसके कारण यह क्या दिखाई देती है आपको, ब्लू। और ब्लू के साथ साथ इसके पास एक चंदा मामा भी है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल इससे चलता रहता है। यूरेनस के बारे में पढ़ लेते। इट इज़ मेड ऑफ ब्लू कलर्ड गैसेज। इट वॉज द सेवन्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ 27 मून। इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, इसमें सिर्फ जान लेते हैं कि 27 इसके पास जो है मून है। मार्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट planet. This is called the red planet because of its red surface. It is the half size of the Earth. It is 2 moon. जो आपका मार्स है, इसके पास 2 मून है, फोमोस और डिमोस जिसका नाम है। और रेड सरफेस होने के कारण इसको द रेड प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। एंड द हाफ साइज मतलब पृथ्वी का आधा हिस्सा जो है इतना बड़ा है ये आपका मार्स। नेपच्यून, इट इज़ द farthest planet of the also coldest strong cold and 13th now moons। इनके पास जो है 13 चंद्रमा है। चंद्रमा जैसे कुछ उपग्रह हैं, सैटेलाइट है नेचुरल। और ये सबसे ठंडा इसी वजह से है क्योंकि सूरज से काफ़ी दूर है ये, ठीक है। अपन भी शायद यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, अगर जाना भी चाहें तो। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। The Earth, our home planet, is the only planet that supported life. This is the possible because has a water and then a layer of is called atmosphere. The Earth is made of four
distinct layer. There are the crust and the mantle and the outer core and the inner core. अब जो आपकी पृथ्वी है वो वहाँ पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और इस वजह से यहाँ पर जीवन सफल है. The outermost layer of the earth is called the crust. Is made of the world rocks and the some minerals. अब पृथ्वी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार है कि इसमें मेंटल पाया जाता है, कोर पाया जाता है, क्रस्ट पाया जाता है और भूपर्पटी जो है इसकी यहाँ पर एटमॉस्फेयर की एक परत चढ़ी हुई है. ठीक है. और यह है आपकी पृथ्वी की संरचना और मूवमेंट ऑफ दिस आवर. The Earth's axis is the sliding that the side an imaginary line called the equator runs round the Earth during it into two equal hills and the northern and the southern hemisphere. अब बेटा इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की जो दो साइडें हैं जिसको अपन एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं वो 23 1/2 डिग्री पर वो झुकी हुई है कक्ष पर अपने. तो इस झुकी हुई के कारण क्या होता है कि जितने भी मौसमी बदलाव होते हैं जैसे कि बारिश होना, गर्मी पड़ना, ठंड होना, जितने भी मौसमी बदलाव होते हैं ये सब इसके कक्ष पर 23 डिग्री झुकने के कारण यह संभव होते हैं. ठीक है. It is spin the earth around its seen different path and the orbit. पृथ्वी जो है सन के अपने एक नियमित राउंड पर ही घूमती है, गमन करती है उस पर. और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और सन की जो साइड है वो पश्चिम से पूर्व. आगे बढ़ते हैं. एज द नॉर्दर्न मूव्स इज नाउ एज नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें इसमें तो जो नॉर्थ पोल है आपका नॉर्थ पोल में ऐसा है कि वहाँ पर पूरा बर्फीला इलाका है. जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें से एक कॉन्टिनेंट ऐसा है अटलांटिक जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पाई जाती है और रात का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री का है. तो इस वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है. और जो आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो इलाका आता है वहाँ पर कहा जाता है कि एक या दो जो व्यक्ति हैं वही वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जाके उन्होंने यह काम दिखाया है. ठीक है. ये चैप्टर यहीं पे अपना ख़त्म होता है. अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं मुझसे. थैंक यू. Celestial bodies form a part of the solar system. Let us learn more about the solar system. Solar system. The Sun and the celestial bodies that revolve around it form the solar system. Apart from the planets, there are also comets, asteroids, satellites of various planets, and dwarf planets. A satellite is a celestial body that orbits a planet.
All planets revolve around the Sun in fixed path called orbits. In order of increasing distance from the Sun, the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Pluto, which was earlier considered as planet, was placed in a separate category called dwarf planet by the International Astronomical Union, (IAU), in August 2006. Look at the diagram given for the solar system. In reality, the planets are much more distant from each other. This diagram gives us a rough idea of how and where each planet is placed. Earth. The Earth is different from all other planets in the solar system. It has water, air, and soil. There is a blanket of air around the Earth, called the atmosphere, which protects it from the harmful ultraviolet rays of the Sun. The surface of the Earth has various features such as oceans, rivers, mountains, and valleys. But, do you know what the inside of the Earth looks like? Let us see it. Internal structure of the Earth. According to scientists, the Earth is not a uniform solid sphere. It consists of different layers. These layers are called the crust, mantle, and core. The core is further divided into the outer and inner core. Crust. It is the outermost layer of the Earth. Its thickness varies from 5 kilometers under the ocean floor to 70 kilometers under the continents. It is made of rocks. Continents and oceans lie on this layer. It contains everything that is essential for life. Mantle. It is the middle layer or layer below the crust. It is about 2,900 kilometers thick. Its upper part is made up of solid rocks, whereas the lower part consists of molten rock. It is from here that molten magma comes out when a volcano erupts. It contains a lot of iron and magnesium. Core. It is the innermost layer forming the center of the Earth. The outer core is about 2,300 kilometers thick. The inner core is about 1,200 kilometers thick. The outer core contains iron and nickel in a molten state. Some sulfur is also present. It contains a lot of iron and magnesium. Sun. The Sun is the star that is closest to the Earth, about 1,500 million kilometers away. It is a huge ball of hot, burning gases. The Sun has a thin layer of atmosphere called the corona. It is this corona that we sometimes see. The spherical Sun has a diameter of about 13,92,000 kilometers. The Sun is so big that a million Earths could fit into it. But it is still considered small because stars are usually much larger. In fact, the Sun is called a dwarf star. The Sun is made up of mainly hydrogen and gas called helium. At the center of the Sun, hydrogen changes into helium. This process releases a large amount of heat and light energy, together called the solar energy. It is this light and heat that we receive on Earth. Solar energy is the most important source of energy for man. It is almost inexhaustible. Well, it might get over, but not for another several billion years, at least. Now, let us learn about Moon. The Moon is also spherical like the Sun and the planets. The Moon is made of rocks and has no air on it. The Moon is the natural satellite of the Earth. Its distance from the Earth is about 3,84,400 kilometers. The Moon does not have any light of its own. The moonlight we see is only reflected sunlight.
The surface of the moon. The surface of the moon is dry and dusty and is covered with craters, mountains, and valleys. Craters are formed when solid bodies, called meteorites, crash into the moon's surface. There's no air or water on the moon. As such, no sound can be heard, since sound needs a medium to travel. The moon also has gravity, with which it pulls all objects towards its center. Phases of the moon. When the moon revolves around the earth, its shape appears to change day by day. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. Landing on the moon. It is a long way indeed to the moon, but man has made that historical trip. The first men to land on the moon were the crew of the American space mission, Apollo 11. It was launched from Kennedy Space Center. The rocket that carried it into space was Saturn V. Apollo 11 carried 3 American astronauts: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. Armstrong was the first to step out, and thus became the first man to set foot on the moon on July 20, 1969. He and Aldrin stayed for 2.5 hours on the moon and collected rock samples to bring back to the Earth. Fact: as the moon has no air or wind, the astronauts' footprints will remain there forever. After Apollo 11, many more missions have gone to the moon and elsewhere in space. Some have been manned, but many more unmanned spacecrafts have been sent to orbit the moon, land on it, and bring back the info. Artificial satellites. Artificial satellites are man-made objects that orbit the Earth. In order to launch satellites into space, we need to overcome the Earth's gravity. This is achieved by launching satellites with powerful rockets. There are different types of satellites, each designed for a specific purpose. Communication satellites send signals for TV and radio programs and telephone calls. Navigation satellites help ships and aircraft find their way. Astronomy satellites carry telescopes into space. And weather satellites help in weather forecasting. Ground stations on Earth send and receive signals to and from these satellites. Eclipses. To be eclipsed means to be hidden. Sometimes, the Sun, Moon, and Earth come into a position as though they are all in a straight line. At times, the Earth comes between the Moon and the Sun, and at other times, the Moon comes between the Sun and the Earth. At such times, the celestial body in the middle casts a shadow, which partially or wholly hides the other celestial body from the Sun. This is called an eclipse. Lunar eclipse. When the Earth comes between the Sun and the Moon, it blocks a lot of the sunlight from reaching the Moon and creates a shadow. This is called an eclipse of the Moon or lunar eclipse. The Earth's shadow has 2 parts, one where the Earth totally blocks the sunlight, the umbra, and the other where the Earth blocks a part of the sunlight, the penumbra. A lunar eclipse may be partial or total. During a partial lunar eclipse, only a part of the Moon can be seen. During a total lunar eclipse, the Moon cannot be seen at all. Solar eclipse. When the Moon comes between the Earth and the Sun, it blocks some parts of the Sun and creates a shadow. The Sun looks as though it has a disk in front of it that creates a shadow. This is called a solar eclipse. The solar eclipse may be partial or total. During a partial solar eclipse, a part of the Sun can be seen. During a total solar eclipse, the Sun cannot be seen at all. The Moon's shadow has 2 parts, the umbra and the penumbra. The region on the Earth where penumbra falls will have a partial solar eclipse. Solar eclipses are of very short duration, a few minutes or so. India's mission to the Moon. The Chandrayaan
One mission is India's first spacecraft to be sent to the moon. It was launched by India's National Space Agency, the Indian Space Research Organisation (ISRO), on the 22nd of October 2008 from the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, Andhra Pradesh. The aim of the mission was to map the moon's surface in high resolution and also get more details of the moon. Let us recap. The Sun and the celestial bodies that revolve around it form the solar system. The Earth consists of three layers: crust, mantle, and core. The Sun is a huge ball of hot, burning gases. The Moon is the natural satellite of the Earth. There are many artificial satellites sent by man to space. These help us in communication, navigation, and weather forecasting. A lunar eclipse happens when the Earth comes between the Sun and the Moon. A solar eclipse happens when the Moon comes between the Sun and the Earth. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to stay updated. Your comments and suggestions are valuable to us.